Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. You're watching Tag TV. India is well known around the world owing to its historical background, diverse cultures and interesting traditions. Its ancient scriptures and texts have been the way of life of its people for thousands of years. Today, the country is taking huge strides in various fields like arts and science, paving a way towards a progressive India. So friends, I am your host Shreyasa Vijay, and today in our episode of My India, we'll take a look at some of the stories that very well showcase the unique culture and prosperity of our country, stretching from Himalayas to Kanyakumari. As the monsoon season arrives in India, the country gears up to enjoy the wet weather and the beautiful month of Shravan, which is marked by a number of auspicious festivals and events. Dedicated to Lord Shiva, this month is all about prayers, devotion and fasting and bears a huge significance in Hindu mythology. So today, let's take a look at how the Indians are observing the Shravan month amid COVID-19 pandemic. Hindu devotees across the country throng temples and rivers to mark the beginning of holy month of Shravan, which will continue till 19th August. While in the Varanasi city of Uttar Pradesh, devotees took a holy dip in the rivers and offered prayers at temples for the peace and prosperity of their families. In Meerut, people gathered early in the morning outside the Shiv Parvati temple to offer their prayers. Amid coronavirus pandemic, devotees preferred to perform all the rituals from outside the holy place, along with adhering to the social distancing norms. भक्त लोग घर पर ही पूजा कर रहे हैं। मैं तो ये पहले बताया था जो पीपल में जल डाल दो इनका नाम लेके। पट जो है सामने से खुला रहता है, लोग बाहर से प्रणाम करते हुए अपना निकल जाते हैं। घर पे रह के लोग पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हैं। Meanwhile, the Gauri Shankar temple in the capital New Delhi was also thronged by a number of devotees who came to offer their prayers to God and Goddess. While devotees were studded with masks, the temple took the extra precautionary measures like installing sanitization machines, conducting thermal screening, sanitizing the place and much more. बहुत चेंजेस है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, ज़्यादा किसी को भीड़ भाड़ लगाई दी नहीं जा रही। एंट्री करते ही सैनिटाइज हाथ करवाए जा रहे हैं, सबको गैप में रखवाया जा रहा है। जो भीड़ लगा भी रहा है, 2-2 मिनट में इंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं कि थोड़ा गैप बना कर रखिए, गैप मेंटेन करके रखिए। तो बहुत चेंजेस है। साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब खुला है। कोई ऐसी मतलब बात नहीं है कि जिससे कि कोविड का यहाँ पे कोई खतरा हो। यहाँ पे बहुत सावधानियाँ बरती जा रही है, बहुत ज़्यादा। Fifth month according to the Hindu calendar, Shravan has a special relevance to Lord Shiv and his spouse Goddess Parvati, and it is believed that worshipping them in this month helps devotees attain salvation or moksha. Devotees also observe fast on the Mondays of this month to attain Lord's blessings. Various festivities like Nag Panchami, Vara Lakshmi Vrat, Govatsa, Raksha Bandhan, Rishi Panchami and many more are also celebrated in this auspicious month, making it the most joyous month of the year. Service to humanity is service to God. This is what we have been taught for ages.
Moving on the same lines, Delhi Sikh Gurudwara Management Committee has started free ambulance service for COVID-19 patients across the capital, no matter which caste or community they belong to. Take a look. Delhi Sikh Gurudwara Management Committee has stepped up its efforts to help the capital win the battle against the virus. On Prakash Purab of the 8th Sikh Guru, Sri Guru Harikrishan Sahib Ji, it made an arrangement of 12 ambulances that are stationed at various parts across Delhi. The ambulances are equipped with all the facilities like oxygen cylinders, ward boys, and anyone who needs the service can get in touch with the nearby Gurudwara. ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲੀ ਇਕਵਿਪਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਪਵੇ ਮਗਰ ਜਿਸ ਲੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 12 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ For the convenience of patients, a control room has also been established so that there is no delay in accessing to this 24/7 service. Moreover, the committee is also in touch with local hospitals and health institutions so that the patients can get the timely help. The committee says that if the need arises, more ambulances will be arranged in the coming time. हमने अपने नंबर्स जो हैं वो सारे जो अपने इलाकों के अंदर भी और सोशल मीडिया पे भी फ़ोन नंबर हमारा दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में इसका कंट्रोल रूम भी है वो हमारे इलेक्टेड मेंबर से भी संपर्क कर सकते हैं हमारे कंट्रोल रूम से भी संपर्क कर सकते हैं और किसी भी जो दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के गुरुद्वारे में संपर्क करेंगे तो वहाँ से उनको ये एम्बुलेंस वहाँ भिजवाई जाएगी. Not just in India, but Sikh community is of great help around the world, especially during these times of pandemic, and the way it is helping those in need, regardless of their caste, color, and religion, is truly commendable. Now, a roundup of some of the major stories that made news recently. A 25-year-old college student in Delhi is stepping in to bridge the gap in online learning right in his own backyard. After a lockdown was imposed to curb the spread of COVID-19, schools in India were shut down. Recently, the government decided to keep the schools closed and move classes online. But for those who in poor neighborhoods and don't access to laptops and smartphones or the internet connectivity, they can lose out in their education. So taking a step forward in the direction of filling this void, Satyendra Pal started holding classes for his neighbors, specifically the 9th and 10th grades. इनके पास ना तो लैपटॉप है कुछ के पास फ़ोन भी नहीं है और ये सब होने के बाद चार्जिंग की व्यवस्था नहीं है ऐसे में फिर इनका कोर्स पीछे रह जाएगा ये गरीब बच्चे हैं इनको किस तरीके से इनका कोर्स पूरा कराना है तो इस माध्यम से इनका कोर्स पूरा कराया जा रहा है For the last 5 years, Pal had been teaching children from the neighborhood slums under a flyover bridge. But the lockdown meant he had to stop the classes. When online classes were introduced, Paul started getting requests from parents of children and therefore he decided to take this initiative.
A jewelry shop in Surat city of Gujarat is selling face masks studded with diamonds worth thousands of dollars. The owner thought of adding bling to the protective gear that has become part of everyday life due to the coronavirus pandemic. The masks are studded with American and real diamonds and cost between $2,000 to $5,300. The masks are already grabbing the eyeballs of some customers who are searching for uniqueness. मेरा सडनली ध्यान यहाँ पे रियल डायमंड के मास्क पे गया, जो मुझे ज्वेलरी से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो मैंने वो मास्क देखे और मुझे पसंद आ गए और मेरे आउटफिट के साथ भी एकदम बैठ रहे थे। तो मैंने वो मास्क की खरीदी की कि मैं सबसे ज़्यादा यूनिक लगूं। Surat is known locally as the Diamond City because it handles 90% of the world's rough diamond cutting and polishing. As the coronavirus pandemic sweeps across India, a restaurant in the city of Madurai is serving up a novel way to remind people to protect themselves through flatbreads shaped like face masks. The Temple City restaurant introduced the flatbreads known as parota to create awareness and encourage people to wear face masks, as many were still reluctant to do so. இது வந்து குழந்தைகள் மத்தியில் பேர் நல்லபடியாக வந்துக்கிட்டு இருக்குது. குழந்தைகளும் அந்த கடையில் போய் மாஸ் பரோட்டா வாங்கிட்டு வாங்குறது எங்களுக்கு வந்து ஆன்லைன் மூலம் நிறைய பார்சலில் வந்து சொல்கிறாங்க. அதனால் வந்து இது வந்து மக்கள் மத்தியில் கொரோனாவோட இதை வந்து தாக்கத்தை வந்து மக்கள் மத்தியில் கட்டுப்படுத்துறதுக்காண்டி மக்கள் எந்த ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருக்கின்ற காரணத்தினால் அவங்க மாஸுங்கிற முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைக்கும் வகையில் எங்கள் கடையில் இந்த மாஸ் பரோட்டா அறிமுகப்படுத்தி மக்கள் வந்து பிரபலமாக போய் கொண்டிருக்கிறது. The parotas, which are shaped by hand and fried in hot oil, are a stable part of people's diet in southern India. Alphabet Inc.'s Google said it will spend around $10 billion in India over the next 5 to 7 years through equity investments and tie-ups, marking its biggest commitment to a key growth market. The investments will be done through a so-called digitization fund, highlighting Google's focus on the rapid pace of growth of apps and software platforms in India, one of the world's biggest internet services markets. Today, I'm excited to announce the Google for India Digitization Fund. Through this effort, we will invest 75,000 crore rupees, or approximately $10 billion, into India over the next 5 to 7 years. We will do this through a mix of equity investments, partnerships, and operational infrastructure and ecosystem investments. This is a reflection of our confidence in the future of India and its digital economy. Google has already made some direct and indirect investments in Indian startups such as local delivery app Dunzo. An Indian startup has designed low-cost ventilators quintessentially for COVID-19 patients as the country is battling the pandemic and a shortage of critical medical supplies. The government-funded AGVA healthcare company based in Noida city near New Delhi has made indigenous cost-effective ventilators for the patients at an intensive care unit fighting the respiratory disease. ये करीब 5 से 10 गुना ज़्यादा सस्ता है दुनिया के और किसी वेंटिलेटर से। एक नॉर्मल वेंटिलेटर की अगर आप बात करें तो 10 से 20 लाख के बीच में एक वेंटिलेटर आता है। हमारा वेंटिलेटर केवल और केवल 1.5 लाख रुपए का है। Various groups across India, including its top car makers, are also assessing ways to manufacture low-cost ventilators to battle a deadly virus that also already claimed the lives of over 20,000 people.
Prime Minister Narendra Modi encouraged youth to focus on reskilling and upskilling in the fast-changing markets to stay relevant in post-COVID-19 employment scenario. Modi said this while addressing the nation on United Nations World Youth Skills Day. Speaking about the employment opportunities in a world after coronavirus, Modi said it is very important to keep brushing up and upgrading professional skills. कोरोना के इस समय में तो ये सवाल और भी अहम हो गया है। साथियों, मैं इसका एक ही जवाब देता हूं। रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। The federal government has also started a labor skill mapping portal which will especially help those migrant laborers who have moved from cities to their villages. Even though we have religious diversity in our society, but when it comes for contributing to a social cause, everyone join hands together as if they are one. Similar incident was witnessed in Murshidabad district of West Bengal, where people of different religions gathered to donate blood, further giving a message that a life of a person is more precious than any religious or cultural difference. Have a look. India has remained a land of religious diversity, assimilating in its fold various cultures and faiths from time to time. It is a land where the philosophy of unity in diversity has not only flourished in its true spirit, but has also become a way of integrating different religious communities. One such example was recently witnessed in Murshidabad district of West Bengal, where an interfaith organization organized a blood donation camp where people of almost all religious faiths donated blood, presenting a wonderful example of communal harmony. এই যে বর্তমান যে অসহিষ্ণুতা সেইটাকে শেষ করার জন্য এবং বিশেষভাবে মুর্শিদাবাদের যে দীর্ঘদিনের যে সম্প্রীতি বজায় আছে সেটাকে আরও অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে আমাদের জেলায় গঠিত হয়েছে সম্প্রীতি মুর্শিদাবাদ সম্প্রীতি মঞ্চ। সেখানে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই, জৈন ৬টা ধর্মের মুর্শিদাবাদের যে বসবাস করে তা সেই সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা আছেন। তো আজকে আমরা এর আগে অনেক পরিষেবা প্রদান করেছি কমিউনাল ভায়োলেন্স রক্ষা সহ। তো আজকে রক্তদান শিবির আয়োজন হয়েছে। তো আমরা সম্প্রীতির বার্তা দিতে চাই, মিলেমিশে থাকতে চাই এবং আজকে যেন সমস্ত জাত পাত মুছে মানুষ বা মানবতা যে মূল সেইটা আমরা সারা দেশকে আমরা সারা পৃথিবীকে আমরা জানাতে চাই। সেই জন্য মুর্শিদাবাদ থেকে এই কাজটা আমরা শুরু করেছি। আগামী দিনে আমরা এই বার্তাটা সব জায়গায় ছড়িয়ে দেব, সম্প্রীতি ম্যাচ গঠন করব, এই আমাদের ইচ্ছা। Organized by Murshidabad Sampriti Manch, the 3-hour-long event saw leaders of Hindu, Muslim, Sikh, Buddhist and Christian communities from the district donating blood to the needy. Held at St. John's Church, the blood was donated by around 100 people including 10 imams and 4 Hindu priests. সমাজকে একটা বার্তাই দেওয়ার আছে যে আপনারা আমাদের এই মঞ্চের পাশে আসুন, আরও বেশি করে উদ্যোগ নেন। আমি নিজেদের শিখ সম্প্রদায়কে আগামী দিন গিয়ে বলবো যেন এই রক্তদান শিবির বা এই টাইপের যে মঞ্চ উদ্যোগ নিচ্ছে তার পাশে আসার জন্য। Having compassion for all and treating all equally, this is what the Indian tradition has taught us for ages, which is still being followed. Examples like these strengthen the secular fabric of the country and showcase the love and harmony that different communities hold for each other.
Bright minds in India are consistently coming up with a number of innovations that are not just making people's lives easier, but are equally contributing towards environmental preservation as well. One such innovation that is grabbing limelight recently is an eco-friendly electric bike, which is created by two engineers from Vadodara city of Gujarat. Have a look. These electric bicycles that are being run on the roads of Vadodara city of Gujarat have been designed by a set of bright minds that are determined to help the society by means of their talent and dedication. Designed by students of mechanical engineering, the bicycle is a cheap electric moped bike which is capable of carrying two people at a time. This invention by young innovators is being praised and lauded by locals as well as the media. ये एक बार चार्ज किया हमने तो 18 से 20 किलोमीटर चलता है और 2 घंटे में पूरा चार्ज हो जाता है और इसकी हम एवरेज गिने तो 20 पैसा पर किलोमीटर पड़ गई हमको। With the ability to run on electricity, this moped is capable of covering a distance of 20 kilometers after charging it for 2 hours, which is its maximum capacity. But inventions like these are not created in a day. These students were seen working hard for a couple of months, and their bike was seen making the rounds on the streets since July 10, after which they finally tasted success. These young innovators are keen on getting their innovation on the roads and want that their creation reaches the common man and could turn out to be useful to commoners. They also hope that with the introduction and growing popularity of electric vehicles like these, electric vehicles acquire a bigger space in Indian automobile sector. हमारे इंडिया में भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पूरा एक कंपनी हो, कंपार्टमेंट हो, उसका एक अलग डिवीज़न दिया जाए, लोगों को हमें बुला के उनको जॉब्स मिलेगा तो हमें इंडिया के अंदर इनोवेटिव्स करने के बिज़नेस के आइडिया मिलेंगे। एज़ पर के बाहर की कंट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के और इंडिया में भी प्रपोर्शन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हमें बिज़नेस पे स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। It is due to creative minds and dedicated people like these that India is standing united in the fight against COVID-19. That's all we have for you this week. Your comments and suggestions are important to us. Do give us your feedback at myindia@nin.com. I'm your host Shreyasa Vijay, and it's goodbye from the entire production team.